Hello everyone, welcome to the Unacademy. Let's crack GATE ESE with India's largest online platform. Hit the subscription now and start unlimited live and the recorded video lectures by the India's top educators. Myself, I'm taking computer science. I have a 8+ year of teaching experience in the GATE as well as 20. I have worked as a freelancer in the many reputed institutes of India and I have qualified the GATE exam 5 times under AIR 500, and also I have qualified the Chhattisgarh exam with AIR 8. So download the Unacademy learning app and start your preparations anywhere, anytime. What you will get? This is the major questions that always arise in the mind of engineering student that why should I go for the Unacademy subscription? So my dear friends, I would like to tell you something that Academy, then the first advantage you are going to have India's top educator guideline. मीन्स आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के थ्रू आपको गाइडलाइन मिलेगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ कैन इमेजिन इफ यू आर having a preparation by the India's top educators, then no compromise in quality. और अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आई होप यू कैन रियलाइज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन रिजल्ट. So apart from that, this is the great weapon of the Unacademy. But apart from that, there are four different things which I have already written over. First one is the daily life classes you are going to have. The second one is structure courses. Okay, and the structure courses means after the completion of the one subject, your next subject will be planned in a proper manner and you will be pre-informed. And for a single subject, you can have a multiple educators that will find under the structure course. And the third thing is the live test and quiz. देखिए, टाइम टू टाइम अपने आप को जज करते रहना, सेल्फ इवोल्यूशन बहुत, और उस पर्पज से यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना. और लास्ट थिंग इज द अनलिमिटेड एक्सेस. यू कैन एक्सेस द वीडियो लेक्चर्स अगेन एंड अगेन until you get the entire concept. So learn with the top educators. These are the educators from the electrical, electronics and civil background, and these are the educators for the mechanical and electrical. So similarly, I have just mentioned the few of the educators. If you will download the Unacademy learning app, you can watch what are the educators are there and what are their teaching experience. है ना, चलिए. Under the GATE ESE, there are various branches. You can see which branches preparations the Unacademy basically offers you. Mechanical, production, instrumentation, chemical, computer science, electrical, electronics. Almost all the branches are there which Unacademy is providing you. So, of course, if you want to get the subscriptions, then there are different model of the. Let me tell you one by one. See, guys, if you think to have a subscription of the 1 month, then your fee structure will become 5,000. But if you are thinking of the subscription of the 3 months, then your fee structure will become 12,500. You are getting that of 17%. Are you getting my point? So here, what I would like to say, मुझे गेट 2021 अब बस 3 महीने बचे हुए पर स्टार्ट हो गए for this. So I must go for the 3 month subscription. But my dear friends, I will advise you, if you are looking for the GATE 2021, then go for the at least 6 month subscription, because after your GATE exam there are more many exam which waiting for you, like ISRO, PAC, TIFR and some state government exams. So if you are looking for the GATE, you are looking for the GATE 21, then must go for the minimum 6 month subscription. The fees will become 20,000. Again, this is a very nominal fees. You don't need to think a lot about this particular fees, because ये फीस आपका ऑलरेडी बहुत नॉमिनल है, ठीक है ना. और अगर आप 12 months के लिए सोच रहे हो, then your fees become 25,000. So my dear friends, either you are going for this or you are going to for this. In both the situations, if you will apply my code, that is the IFA, you will immediately get the 10% discount. How much? You will immediately get the 10%, and your final fees will be 22,500 if you are taking the subscription for 1 year.
Similarly, if you are looking for the like 6 month subscriptions, then after the 10% discount, your fees, got it? How much? Friends, this is the nominal fees which anyone who are looking for their career can afford. The quite nominal fees, and in this nominal fees, you are getting a lot of things. First thing, you are getting a like India's best and top education. So if you are in second year, if you are in second year or the third year and you are looking for the GATE 2020, what GATE 2020? So already I have described that for the 12-month fee structure is 25,000. So if you are looking for the GATE 2022, must go for the 24-month subscription and your final fees come how much? 40,000. So my dear friends, once you will compare the fees with respect to the 1 year courses, there is a difference में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. आई होप जो आपका डिसीजन होगा वो प्रॉपर होगा. सो जस्ट गो फॉर द 24 month subscriptions and once you will apply my code again, ये फीस वो नहीं है जो आपको दिख रहा है. अगेन once you will apply my code, that is the I4, you will immediately get the 10% discount. How much? Minimum 10%. Final fees will become 27,000. How much? 27,000. Got it? So this is the introductory session, and before leaving this session, I would like to tell you one thing more, that this particular code, whatever mentioned over here, that is the IFA, ये सिर्फ गेट ESE के लिए ही नहीं है. अगर आप सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो GRE या कैट का प्रिपरेशन कर रहा है या UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, CRF का प्रिपरेशन कर रहा है, और आपके कोई कजन ब्रदर या सिस्टर है जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, UPSC हो, SSC JEE हो, बैंकिंग हो, वट एवर इट इज, in all the situation you can apply my code, that is the IFA discount, not a problem at all. I hope you are understanding. Unacademy प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है, आप किसी भी कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के पर्पज से आप इसको कर सकते हैं. यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर एंड सो. लेट्स कम टू द, लेट्स क्रैक गेट एट द रेट फर्स्ट अटेम्प्ट. दिस इज आवर मेजर टारगेट. हमारा जो मेजर टारगेट है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ रहे हैं वो पहले ही अटेम्प्ट में गेट को कैसे क्रैक करना है इसके बारे में बताना. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन माय सेशन आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल इन अ स्मार्ट वे. किसी भी न्यूमेरिकल को देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों के पास होता है लेकिन फिर भी बच्चे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. द रीजन बिहाइंड इज दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई देयर कॉन्सेप्ट while solving the numerical. Are you getting my point? So मेरे सेशन में जो आपको सबसे डिफरेंट देखने को मिलने वाला है वो ये है कि even though you have a concept, how you can apply your concept to solve the. So let's start the numerical, and our today topic is the algorithm, and inside the algorithm I will discuss about the complexity theory. So guys, this is the series of the complexity theories, and today I will cover only the part 1. सो ये मेरा आप सभी से एडवाइस है कि अगर आप मेरे सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा पार्ट अटेंड करना पड़ेगा. मीन जस्ट अ पार्ट 1, यू हैव टू अटेंड द पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सो ऑन. सो इस पूरे सीरीज में ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो आपके गेट में आने वाले हैं, ठीक है ना, इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ. तो लेट्स स्टार्ट द. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है लेट Tn बी डिफाइंड बाय T of 1 is equal to 10 and Tn plus 1 is equal to 2n plus n for all integers and greater than. देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिकर्सिव कॉल्स है जो आप शायद कभी देखे होंगे, ठीक है ना. अभी तक हम लोग देखते थे Tn इक्वल टू 2n/2 एंड प्लस ऑर्डर ऑफ एन या प्लस लॉग ऑफ एन, इस तरह का हम लोगों ने देखा था. लेकिन ये थोड़ा सा अलग है. ये थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर टी एन के बजाय वो आपसे टी एन प्लस 1 का इक्वेशन आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टी ऑफ एन एज द फंक्शन
My dear friends, let's try to solve this right. As T of n equal to T of plus 1 is equal to n plus of, is this given? Yes or no? So what you have to do, you have to find ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग टी ऑफ एन मीन्स अगर एन का वैल्यू हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, ये क्या कैलकुलेट होगा? टी ऑफ वन इज इक्वल टू इंटू एन का वैल्यू हम लोगों ने जीरो ले रखा है, तो प्लस अल्टीमेटली विल बिकम, सो टी ऑफ वन इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। यस और नो? एंड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है टी ऑफ वन इज इक्वल टू 10 प्लस of 0 equal to also 10. This 10 is nothing but a constant value. See, if I am assuming n is equal to 1, this situation t of, if you will put the value of n is equal to 1, then it will become t of 2 equal to into 1 and plus t of, fine. Now if you will put the n is equal to become t equal to plus t of, just utilize the previous terms. अगर इसको यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू वन प्लस टी ऑफ, yes or no? Similarly, if you will calculate the t of n is equal to 3, some t of 4 equal to n plus t of 3, और इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? n plus plus of. Similarly, if you will try to find out the n is equal to n माइनस, अगर हम लोग इसके लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पर n इज इक्वल टू, अगर हम लोग n माइनस वन लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 2 इंटू n माइनस वन। ये देखो आप यहाँ पर आप समझो, अगर हम लोगों ने n का वैल्यू 1 लिए हैं, ठीक है ना, इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द n इज इक्वल टू 1, देन वी आर मल्टीप्लाई बाय 1। if we are taking the n is equal to 2, then we are multiplying by 2. If we are taking the n is equal to 3, then we are multiplying by 3. Similarly, if we are taking the n is equal to n minus 1, then we should multiply by n minus 1. Similarly, plus up to dot 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 1 plus take the 2 as a common. अगर हम लोग 2 as a common लेते हैं तो क्या आएगा? n plus n minus plus up to dot dot plus, and it become, my dear friends, what is the sum of this value? Already know this is the AP series, and the sum of the arithmetic progression series is n into n plus 1 divided by 2, the sum. And here we are starting from the 1 and we are moving to the terms n minus. So here the sum will become n into n minus 1 divided by, ultimately come 2 into n minus divided by 2 plus t of, it will become n square minus n. What is the value of this?
value of this is constant because it is given as 10. Ultimately we can write the constant. We can write, finally we can write order of. So this will become the final. This will become the final. Just look upon this question. What will be the right answer of this particular question? The right answer will become option. So in this manner, what we have done, we have used the substitution method. So my dear friends, basically, if we will talk about the GATE point of view, देखिए गेट के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी से दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है ना. फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी विल फाइंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. The first questions will belong to the iterative function. Iterative, and the second question will belongs to recursive. तो इटरेटिव फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग को लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है. क्या अप्लाई करना पड़ता है? वी हैव टू अप्लाई सिंपली द लॉजिक. ओके, आई विल गिव यू द एग्जांपल, डोंट वरी. बट if any problem belongs to the recursive, if any problem, then it can be solved by the recurrence relation. Recurrence. तो हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस के लिए सबसे पहले हम लोग रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं. यू हैव रिटन द रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग it will give us time complexity, time. तो हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई भी फंक्शन रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस फंक्शंस है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, रेकरेंस रिलेशंस में कन्वर्ट करना है. एंड सॉल्विंग इट विल गिव अस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. तो रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन अलग अलग मेथड है. देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन. आई होप. वन इज द सब्स्टिट्यूट. Second one is the master theorem, and third one is the recursive. There are three different methods. इटरेटिव फंक्शन का मतलब हो गया एक ऐसा फंक्शन जिसमें रिकर्शन नहीं है. क्या नहीं है? रिकर्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, suppose n I is equal to 1, I less equal to n, I. इसके बाद अगेन गिवन है और a is equal to 1, a less than equal to n plus printf. हर बार हम लोग स्टार प्रिंट. Of course, this printing will take the constant time. This printing will take the constant time. So ultimately what we have to find out, how many times the loop is executing. How many times the loop is executing. अगर हम लोग आउटर लूप के बारे में सोचें तो आउटर लूप कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? n टाइम्स. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द इटरेटिव फंक्शन, दिस इज नॉट अ रिकर्सिव फंक्शन. और इस इटरेटिव फंक्शन के लिए हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो द इनर लूप डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आई. इनर लूप कितने बार चलेगा ये डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू ऑफ आई पे. चलिए हम लोग देखते हैं. ये हो गया हमारा आउटर लूप.
और ये हो गया हमारा इनर लूप। चलिए चलिए, अगर हम लोग i इक्वल टू 1 लेते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग द i इक्वल टू 1, हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड? तो देखिए j प्लस इज इक्वल टू i इक्वल टू 1, सो द इनर लूप विल एग्जीक्यूट द n टाइम्स, n बार चलेगा क्योंकि j में बार बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली इफ यू विल कंसिडर द i इक्वल टू 2, तो इनर लूप कितने बार चलेगा? n बाई 2 टाइम्स। क्या आप सोचो, अगर आपको अगर आपको 100 लोकेशन पे पहुंचना है और आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप मूव कैसे कर रहे हैं, 1 देन 3 देन 5 देन 7, तो आप 100 लोकेशन में कितने टाइम के बाद पहुंचोगे? क्या ना, आधे टाइम पे आप वो डिस्टेंस कवर अप कर लोगे, मींस इट विल टेक द n by 2 स्टेप्स। सो इफ i इक्वल टू 2, then this conditions will run up to the n by times. Similarly, if I equal to 3, then it will execute the n by 3. If I equal to 4, it will execute the n by. So if I equal to n, then it will execute the. So what we are finding over here, ये एक्चुअली में जितने बार इनर लूप चलेगा उतने ही बार तो प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना। दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स printf statements execute। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, इन सभी का सम कर लेना है। भाई इतने बार ही मेरा टोटल लूप चल रहा है, तो इन सभी वैल्यू का सम कर लेना है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सम ऑफ दिस वैल्यू। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी द प्रीवियस रिकर्सिव कॉल, sorry, previous iterative call will become n plus n by 2 plus n by 3 plus up to dot dot dot। अगर ये 1 है तो इसको n by n लिख सकते हैं। इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस 1 कैन बी रिटन एज n by n। तो same thing we have written over here। now take the n as a common, we'll take n as a common, it become 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus up to dot 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 plus 1 by। My dear friends, if you have a knowledge about the series, if you have a knowledge about the series, then sum of this series is nothing but the of, just note it down। कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, इस सीरीज का जो सम होता है प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1 बाई n, इस सीरीज का सम होता है लॉग ऑफ सेकेंड। अगर हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1 बाई लॉग ऑफ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द लॉग n। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स log n है, तो इट विल बिकम log log, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली तो फैक्टोरियल n होते हैं, फैक्टोरियल n का अपर बाउंड होता है ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n। सिमिलरली 1 by 2 to the power 0 plus 1 by 2 to the power 1 plus 1 by 2 to the power 2 plus dot 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 1 by 2 to the power of n। ये जो होगा का सम कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ 1। so these are the few key points which you have to remember while solving any problem related with the complexity theory। और इन सभी का प्रूफ है, परेशान नहीं होना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इन सभी का प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम n log n, ultimately it will become order of n, will become the time complexity of the iterative function। इस iterative function का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है भाई?
is the order of n. Got it? Now let's think about the recursive function. ये तो मैंने iterative functions का time complexity find out करने का तरीका बताया. Iterative function suppose इस तरह से दिया हुआ है int n, ठीक है ना? If n is less than 1, then return, else f of n by 2, again f of n by 2, and again printf this is the recursive function given. What is this? This is the recursive function. किसी भी recursive function का time complexity कैसे find out करेंगे? How to find out the time complexity of the recursive function? So my dear friends, find out the time complexity of the recursive functions. The first step you have to follow is convert it into recurrence. To what? The recurrence relation. तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन f of n कॉल हो रहा है, और जब f of n फंक्शन कॉल हो रहा है तो n का वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है तो रिटर्न मीन्स ये तो कांस्टेंट टाइम में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना? आप सोचो अगर n का वैल्यू 0 हो जाता है तो सिंपली कंट्रोल क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बार बार ये रिकर्सिवली कॉल होगा. क्या कॉल होगा? f of n by 2 कॉल होगा एंड प्लस f of n by कॉल होगा एंड प्लस प्रिंट होगा, ठीक है ना? प्लस प्रिंट होगा. प्रिंट कितने टाइम पे होगा? कांस्टेंट टाइम पे. तो दैट्स बाय ऑर्डर ऑफ 1. फाइनली व्हाट वी कैन राइट if f is nothing but t, then we can write t of n is equal to, ये सेम है, कहेंगे n by 2 and plus this will become c means become the recurrence relation of this particular problem. Now solution of this recurrence relation will become the time complexity of the recursive function. Are you getting my point? Solution of this recurrence relation will first time complexity of actual recursive got it will give us the time complexity of the actual recursive. ये जो हमारा एक्चुअल रिकर्सिव फंक्शन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हमको दे देगा. तो ऑफ कोर्स ये आपको पता है इस रेफरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन. चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. q ऑफ n इक्वल टू क्या गिवन है? n by 2 एंड प्लस c. चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? वी आर सब्स्टिट्यूट. सो अगर हम लोग n के जगह n by 2 पुट करते हैं, n के जगह आप n by 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा? n by 2 इज इक्वल टू t n by 2 स्क्वायर प्लस c. इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट t n by 2 स्क्वायर प्लस एंड दिस वन इज ऑल्सो ये वाला c ये वाला पार्ट का है और ये सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है. तो अब 2 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? 2 स्क्वायर t
n बाई स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड इट, so this we are getting in cost substitute. Cost पहले सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द स्क्वायर हियर, स्क्वायर हियर एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. सिमिलरली अगर आप सेकेंड टाइम सब्स्टिट्यूट करोगे विल फाइंड 3 पावर 3 t n by power 3 and it will become 2 square c and plus this you will find in the second सब्स्टिट्यूशन में ये आपको मिले. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, तो ये पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 पावर 0 है. सिमिलरली सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में पावर 3 है, अगर हम लोग k माइनस 1 टाइम्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, k माइनस 1 टाइम्स अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कम पावर k t n by power k and plus it will become 2 power minus 1 and plus power minus plus dot see. Now my dear friends, please try to understand. See, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बार बार n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बार बार किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो कभी ना कभी ये 1 हो जाएगा. सिमिलरली if n by 2 power k is equal to 1, this implies n is equal to 2 power k. Now take log on both sides, it will become k equal to log of k is equal to. So what we are getting from here, we will get from here value of k, log of n and t of n by 2 to the power k को हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, 1. So, हम आप यहाँ से c को कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचेगा, पावर k माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 एंड प्लस अप टू डॉट प्लस. सो अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 टू पावर लॉग ऑफ n इज इक्वल टू, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं. द बेसिकली लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, सी पावर लॉग ऑफ n इज इक्वल टू, हम लोगों ने p एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम द p. नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा, log of n equal to p, sorry, equal to log of p. Now remove the log from both sides, equal to what ultimately we can write it n into t of n. This is the constant p1. So c come to power minus 1 plus 2 power k minus 2 plus up dot. तो अब हमको देखना ये है कि इस सीरीज का सम क्या आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर. देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस स्क्वायर प्लस अप टू डॉट पावर माइनस 2 and 2. So my dear friends, this is the GP series. I hope you know about metrical equation series. In this situation what is the sum of this series. देखिए GP series का सम क्या होता है, sum of the GP series a r to the power n minus 1 divided by r minus if r is greater than. देखिए r का मतलब होता है रेशियो, r का मतलब होता है रेशियो ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, रेशियो ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स. यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 2 और 2 to the power 3 divided by 2 to the power 2
इक्वल टू सभी कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मीन्स जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। ए इज द इनिशियल टर्म क्या है भाई, 1 है। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द, इस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 0, अगर कहीं पर भी 1 गिवन है इट मींस इट इज अ 2 टू द पावर 0, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, we are moving to the k minus 1, so the total number of terms will become k, yes or no. So let's try to find it out. So the sum will become power 0 power k 1 divided by 2 minus 1 power log of n minus 1. Ultimately p of n coming out n into 1 plus the time complexity of this particular recurrence relation become order of, means इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो राइट आंसर होगा टाइम कॉम्प्लेक्स। So are you getting my point? How to calculate the time complexity for the iterative function and the recursive function? Iterative function के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है and you will get the answer. But if you try to find out, if you will try to find out the time complexity of the recursive function, then first of all you have to convert the recursive function into the recurrence relation, and then you have to solve the recurrence relation by using any one of the method. Either you can use the substitution method or the master system or the, so let's come to the next number. My dear friends, let's see, this is the one of the unique number. Here there are 4 different algorithms A1, A2 and A4 to solve a given problem with the order respectively. Which is the best algorithm? Which is the best algorithm? होता है जब वो मिनिमम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, है ना। कोई भी एल्गोरिथम बेस्ट कब होगा, इट टेक्स मिनिमम टाइम टाइम सॉल्व, this is the first logic. The second thing is how to compare the time complexity which is given over here. 4 अलग अलग एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं वहां पर जो हम लोग टर्म्स n का यूज करते हैं, तो n जो होता है दिस इज एक्चुअली द इनपुट साइज ऑफ एल्गोरिथम, and the time phi for the higher input size. Always remember, time complexity, time space state state higher value इनपुट साइज के लार्जर वैल्यू के लिए हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होता है, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस गिवन है, आप इसको ध्यान से समझिए। अब आप देखो A1 का कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है log ऑफ n और A2 का कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है log n। ऑफ कोर्स log n का वैल्यू हमेशा छोटा होगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए if n is equal to, we are assuming 2 to the power 60, this is the input,
तो एल्गोरिथम A1 का टाइम कितना होगा, will become log of n, come log of 2 power 6 come, and A2 का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इट इज अ log n, ultimately log 2 power 16 become log of 16 come. A3 का देखते हैं, A3 का क्या गिवन है, A3 का गिवन है n log n, and your friends it is n log of n equivalent to the power 16 into log of 2 power 16 come to power what the A4 is given. A4 is given as n divided by log of n divided by power 6 divided by power. So what you are getting from the first algorithm, it is taking the 16, second one is taking the, third one is taking the this, and the fourth one is taking the. So सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है A3 में, A3 के बाद नेक्स्ट टाइम किस में लग रहा है, A4 में, A4 के बाद कौन है, A1 है, A1 के बाद कौन है, A2 है. Means A2 is the algorithm which is taking the minimum time, taking the minimum. Are you getting my point? So the right answer of these particular questions will become option. Is that clear to all of you? Now let's come to the next numerical. You have to think in a similar way for the next numerical. Okay, see the next question. इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, f of n इक्वल टू log of n to the power 1/2 and g of n इक्वल टू दिस. तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और यहाँ पर एक बिगो नोटेशन का सिंबल यूज है और एक ओमेगा नोटेशन का सिंबल यूज है. जी ओवर हियर आपको क्वेश्चन में गिवन है f of n इज इक्वल टू अंडर log of n, log of n, and g of n गिवन है log log. अब मैंने आपसे क्या बोला है कि whenever we are trying to find out the time complexity we always think about the higher input size. जो इनपुट का साइज होगा वो हमेशा हाई होना चाहिए. चलिए अब इसके बारे में सोचते हैं. इफ n is equal to the power 16, just time assume, ठीक है ना, तो f of n से क्या डिराइव होगा, f of n will become root under log of power 16 will become 16 and it will become similarly g of n क्या कैलकुलेट करेगा, तो g of n is equal to log power 6. Also this will become the, so in the first case, this is the case 1, the first case whenever we are considering the n is equal to 2 or 16, we are getting the same value, we are getting the same value by both the function f of n and g of n. Now let's try to think for the next value, थोड़ा सा अलग वैल्यू लेते हैं ना. चलिए if n is equal to power, if n is equal to power 6, second situation, f of n will become under log of power 6 becomes 6, and this one will, how to calculate the root, 8 into 8, it is the 8, 64 means 80 square, so 1 8 will come out. Similarly g of n, value of will become log power 6, and this will become
log of 4. Now how you can write this? You can write this log of power how much? 6, and it will come. So my dear friends, whenever we are increasing the size of input, the rate of growth of f of n is higher than g of n, because you are getting here the 8 and you are getting here the 6. Means for higher input size, rate of f of n higher than g of f of n फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ है वो g of n से हाई हो रहा है, ठीक है ना. मीन्स f of n could become the upper bound of g of n, but g of n can never be a upper bound of f of n. What does it mean? That g of n अगर कोई फंक्शन है तो g of n का अपर बाउंड f of n हो सकता है, ठीक है ना. लेकिन लेकिन अगर कोई बोले कि f of n का अपर बाउंड है g of n, तो दिस इज entirely incorrect. So to understand this, you have to understand first of all what is the meaning of f of n and means big O notation and omega. So I am giving you the like idea about the big O and omega in a very simple form. See, big O का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O से नोटेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सपोज f of n का अपर बाउंड है कौन? g of n. इसका मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ g of n इज हायर देन द f of n. और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो f of n should be less than equal to into g of n and it should be greater than equal to what it. अगर g of n f of n का अपर बाउंड है, इस सिचुएशन में g of n should be greater than equal to f of n. मीन्स क्या हो रहा है? रेट ऑफ f g of n higher than. Similarly, first thing and this is, अगर मैं आपको बताता हूँ दैट इज, अगर कहीं पर भी गिवन है f of n का लोअर बाउंड है, ओमेगा का मीन्स होता है लोअर, g of n. व्हाट डज इट मीन? अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स इनटू g of n less than equal to f of n and this entire thing should be greater than equal to 0. This entire thing should be greater than equal to. Means in this situation the rate of growth of f of n is greater than g of n. Rate of f of n greater than. Are you getting my point or not? So the same concept I am applying over here. n के वैल्यू को हमने जैसे ही इंक्रीज किया, पहले हम लोगों ने ले रखा था 2 to the power 16, तो we have analyzed both are deriving the same value. So whenever we have increased the value of n, we are finding the f of n is equal to 8 and g of n is equal to 6. Means f of n अपर बाउंड है किसका? g of n का. लेकिन अगर कोई बोलेगा कि f of n is the upper bound of g of n, लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि g of n is the upper bound of f of n, then this is completely wrong. What will be the right answer of this question? चलिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है f of n का अपर बाउंड है g of n, f of n का अपर बाउंड है g of n. ये गलत है. This is the wrong statement. g of n का अपर बाउंड है f of n. This is the true statement.
और लास्ट में क्या दिया हुआ है, g of n का लोअर बाउंड है f of n. What does it mean? It means c into f of n less than equal to g of n, and this one greater than equal to 0. भाई अगर f of n लोअर बाउंड है तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ f of n शुड बी स्मॉलर देन द g of n. क्या ये कंडीशन ट्रू है? देखिए g of n का वैल्यू आ रहा है 6 और f of n का वैल्यू आ रहा है 8, तो यहाँ पर ये वैल्यू है 6 और ये वैल्यू है 8. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है. दिस इज द सो ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नन ऑफ दिस भी बोलना सही नहीं है. सो राइट आंसर शुड बी गॉट इट एवरीवन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए. एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगेन आई विल टेल यू, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज द IFA, and get the 10% discount. And for any clarification you can WhatsApp me on this number 92649515. For the maximum discount you can WhatsApp me on this particular number. Now let's move to next number. ये न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये न्यूमेरिकल आपका जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है ट्री से, है ना. आप लोगों ने ट्री ट्रैवर्सिंग टेक्निक देखा होगा. अब इस प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है कि ये आपका रिकर्सिव फंक्शन गिवन है. दिस फंक्शन इज अ रिकर्सिव, एक रिकर्सिव फंक्शन आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस रिकर्सिव फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है. इसमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू recurrence. अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था ना, यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेकरेंस रिलेशन. so we have converted by some logic. So similarly what you have to do over here, you have to convert this particular recursive function into the recurrence relation. Now let's see what is the logic of the converting the recursive recurrence relation. तो गाइस इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक अबाउट द ट्री. चलिए हम लोग एक ट्री ले रहे हैं. वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर बाइनरी, ठीक है ना. और बाइनरी ट्री में हमारा एड्रेस होता है, इस नोड का एड्रेस है 100 100 हर एक नोड का एक एड्रेस होता है. ऑफ कोर्स P1 रूट पे हम लोग क्या पास करेंगे, वी विल पास द एड्रेस ऑफ द रूट, ठीक है ना. अब ये कॉल हो रहा है, तो पहले क्या कॉल हो रहा है, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू. एंड आफ्टर दैट वी आर कॉलिंग P1 की एरो लेफ्ट सब ट्री. तो लेफ्ट सब ट्री में एड्रेस कौन सा जाएगा, 200 का. अगेन राइट सब ट्री, दैट इज द P1 100. मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, वी हैव प्रिंटेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू and we have divided the entire tree into the two parts, into the two equal. Are you getting my point or not, all of you? इस सिचुएशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझो. सारा खेल लॉजिक का है. वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि एड्रेस 100 पे स्टोर्ड है. उसके बाद मैंने पूरे ट्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसमें कर दिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. Are you getting my point? So if there are n number of nodes, there are n number of nodes in binary tree, then first of all we are printing the root value, and by this particular recursive call, we are dividing the entire number of nodes into two equal parts, that is the n by 2 and again n by
तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रिंटिंग के लिए टाइम कितना चाहिए? कांस्टेंट टाइम में प्रिंटिंग हो जाएगा और इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस अगर किसी भी फंक्शन में ट्री में, तो हमने क्या किया, इसकी n by n plus we have printed the value in a constant time, so become order of become final occurrence. What will be your right answer? Right answer should be a right answer should be a I hope you enjoy this particular questions. ये देखिए, सोचने पे हर चीज डिपेंड करता है, आप किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो whether you are considering the real life example or not, you have to consider example related with the tree and then you have to approach the solution. Are you getting my point or not, all of you? So my dear friends, let's come to the next. See over here, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f of n is equal to so मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हमेशा हायर वैल्यू ऑफ n के लिए कंप्यूट होता है। यस और नो? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज डिसाइडेड फॉर द हायर वैल्यू ऑफ n। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि अगर n का रेंज 0 to 10,000 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, अदरवाइज ये होगा। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर बाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n बिटवीन सम रेंजेस, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n का खुद का कोई रेंज नहीं होता है। इट कुड बी अ वेरी वेरी हाई। सो ये जो सिचुएशन है, अदरवाइज दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to the power 4 का सिचुएशन है, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स द एंटायर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डोमिनेटेड इनटू द सेकंड पार्ट। मीन्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट f of n का अपर बाउंड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इस फंक्शन का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हम लोग हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हायर वैल्यू ऑफ n के लिए ही कंसीडर करते हैं। सिमिलरली इन दिस सिचुएशन, अगर n का वैल्यू 0 to 100 के बीच में लाई करता है तो इट शुड बी अ n, अदरवाइज दिस वन। तो अदरवाइज में ये क्या है, अगेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है और हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हायर वैल्यू के लिए कंप्यूट होता है। तो सो g of n will become again order of n square. Yes or no? Because we are just considering this particular function. So what is the upper bound of this particular function? This is the n square. Means दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है f of n का अपर बाउंड है n क्यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग कभी भी बोलते हैं f of n का अपर बाउंड ऑप्शंस में गिवन है n क्यू, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कहीं पर भी गिवन है f of n इज इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ g of n, मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि f of n be less than equal to g of n, yes or no, and this one be greater than 0। तो अगर मैंने यहाँ पर n q लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, q of n। अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट, f of n is less than equal to c into nq, and what the f of n value you are getting from the actual function, you are getting the n square is less than equal to c into nq। Ultimately this is the true statement, the true statement। So the first one is similarly g of n is nq, ट्रू है, ये भी ट्रू है, yes or no, and order of f of n is same as order of g of course ये भी, means all these statements are, ठीक है ना? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके MSQ टाइप का है। किस तरह का है, MSQ टाइप क्वेश्चंस which is introduced in the GATE 2020। I hope all of you are aware of the new pattern of the GATE।
दैट द MSQ टाइप क्वेश्चन जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके क्या होंगे, ट्रू हो सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ मैंने सेलेक्टेड प्रॉब्लम कंसिडर किया था आपको ये बताने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट द different method that's comes under the like recurrence relations, that is the substitution method, recursive tree method, and master. So before leaving this session, again I will tell you, never forget to use my code, that is the IFA. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो never forget to use this code and immediately or minimum you will get the 10% discount. Must subscribe our channel and press the bell icon button, get all the notification. Whenever I will come online, you will get the notification over there. तो आप जल्द से जल्द बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रहे, एंड यू कैन पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आपके वैल्यूएबल कमेंट्स से ही दूसरे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलता है. So never forget to put your valuable comments. If you want to text me something, then you can use my Telegram number. That is the 92955. My Telegram number. For any queries, you can just contact on this particular Telegram number. Thank you very much. Stay happy. Good.